Welcome back to our UPSC Prelims PYQ series from 1979 to 2024. यहाँ we are decoding Prelims PYQs, analyzing Prelims PYQs, and solving Prelims PYQs from 2024 till 1979 in a reverse way. It is of 45 plus years. It is done theme-wise and subject-wise, and similar initiatives is going on for science and technology, geography, and environment. And with time, we'll also deliver on economy and history PYQs. So remain tuned with this initiative. Fine. I just want to tell you that same question which we will solve today, it will be appearing on your PYQ portal on Edukemy, and for the same topic, class notes will be provided. The link will be in the description. We are starting with PSP Prelims Support Program 2025 from 9th of December 2024. So let's start. दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट. पार्ट 1 हमने किया था पहले वीडियो में, जहां हमने 2024 से लेकर 2011 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ दिस इज पार्ट 2 फ्रॉम वेयर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 to 1979. Right? This is part 2, but we'll deal here from 2011 to 1979. इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए डू चेक आउट पार्ट 1 ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट. So let's start. Question number 1, which was asked in 2011. The Constitution, 73rd Amendment Act 1992, aims at promoting Panchayati Raj institutions in the country, provides for which of the following? पढ़ते हैं इसको. Constitution of District Planning Committee. अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज विथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, नॉट 73rd. राइट. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. तो अगर मुझे फर्स्ट पता है, ठीक है, and because it is better suited at that level to plan it, right? अपने आप में get the answer. ठीक, UPSC also wants you to pick the right statement and reach to an answer. ठीक है, the answer here is अपने आप C. Now पढ़ लेते हैं इसको. State Election Commission to conduct all Panchayat elections, you know, right? Then establishment of State Finance Commission to make the positions of Panchayat strong. ठीक है, regarding finances. ठीक है, to see the revenue distribution in local governments. Fine. The answer here is C. Now come to second question. In which of the following areas does the state government do not have control over its local bodies? है ना? तो state, you know, fine, has control over local bodies, yes, at every level. ठीक है, तो citizen grievances, yes, ठीक है, financial matters, yes, because panchayat or local government is dependent on state for its finances. Then legislation, yes, जो भी कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, है ना, वो लागू हो रहे हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में. बट पर्सनल मैटर्स, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है नहीं. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2001, ठीक है, द मोस्ट सूटेड आंसर इज पर्सनल मैटर्स, डी. राइट. लेट्स सी द सॉल्यूशन. इन पर्सनल मैटर्स द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडी. नाउ मेक अ नोट आउट ऑफ इट, हमेशा इसको याद रखिएगा. ठीक है, अगर हम देख रहे हैं लोकल सेल गवर्नमेंट के जितने क्वेश्चन हैं, it was conceptual when we solved from 2011 to 2024, but now we are moving back from 2021, from 2011 to 1979. We are seeing that the questions are more of factual nature. ठीक है, always remember that. Now before moving forward, we are coming up with PSP, our Prelim Support Program, which has following components which you can see here. Practice test, analysis sheet, marathon sessions हैं, book reading sessions हैं, revision sessions and tests हैं. We'll also have UPSC mixed test, current affairs revision of 25 classes of last 1 year, CSAT support, one-to-one mentorship, test discussion, and lastly Prayas, which is all India mock test. Our PSP is starting from 9th of December 2024. Fine. Now these are some of our USPs of PSP. There are 45% of enrolled students qualified for this prayer prelims, and around 50% questions were direct hit. It helped them boosting their accuracy and increase their confidence. Right? Let's move to next question. Question number 3. Holding of elections for the panchayats is decided by. ठीक है, one of the easiest question I think. 1991 में पूछा हुआ. कौन डिसाइड करेगा इलेक्शन को? पंचायत के इलेक्शन को कौन डिसाइड करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स. ठीक है, इलेक्शन कमीशन तो सेंट्रल लेवल का देखता है, तो इट कैन नॉट बी देयर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1991. 92, 93 में रिफॉर्म्स आए थे. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नो. The answer here is C, state government. ठीक है,
रिमेंबर द क्वेश्चन इज 1991, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पहले। आंसर इज सी। Holding of election to panchayats is the responsibility of state governments and the state election commission. Panchayat elections are held in states where Part 9 applies as mandated by constitution. Let's move to next question. Question number 4. Now, इसको solve करने से पहले I just want to tell you that similar initiatives of PYQ solving is going on for science and technology, geography, as well as environment. In the upcoming time, we'll also come up with economy and history. ठीक है, तो stay tuned for that. Now, question number 4, asked in 1990. पढ़ लेते हैं इसको। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेर सेट अप टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग टू विलेज लेवल, है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का काम ही यही था, टू डिसेंट्रलाइज दिस प्लानिंग, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, विच वी सॉ इन अर्लियर वीडियो। नाउ ये assertion है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? विलेज पंचायत आर इन अ बेटर पोजिशन टू हैव प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ देयर डेवलपमेंट नीड्स, राइट? यस, राइट। दिस इज आर इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर ए, है ना। तो इस वजह से दोनों सही लग रहे हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ ए। तो हमें आंसर होगा ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट कवर्ड बाय पंचायती राज? नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन 1986 में। यू कैन सी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, राइट। तुक्का मारने का सवाल नहीं होता, बट यू कैन स्टिल फिगर आउट समथिंग। लाइक मणिपुर एंड आसाम तो नहीं होगा, आसाम इज अ वेरी बिग स्टेट, ठीक है। इट शुड हैव 3 tier सिस्टम पंचायती राज। आसाम एंड बंगाल भी नहीं हो सकता, राइट। तो ये तो हट गया, ठीक है। अब बचा ए एंड सी। इफ आई टॉक अबाउट ए एंड सी, मेघालय एंड नागालैंड इज द आंसर एंड इट इज मोस्ट सूटेड फॉर, ठीक है, नॉट कवर्ड बाय पंचायती राज। Got it. Now, some fact for you. It was a very tough question in exam because A and C के बीच में हो सकता है आप पढ़ सकते थे. Now, some facts for you. We have Meghalaya, Nagaland. We have Meghalaya, Nagaland, Mizoram, as well as Delhi. Delhi. ठीक है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड दीज स्टेट्स डू नॉट हैव और डू नॉट कवर्ड बाय पंचायती राज। तो हमेशा याद रखना, मेक अ नोट आउट ऑफ इट, ठीक है। ये प्रो मेंटोटिव फॉर यू। द आंसर हियर इज सी देन, ठीक है, मेघालय एंड नागालैंड। So let's move to next question. The Panchayati Raj was first introduced in the states of Rajasthan and Dash. ठीक है, तो if you know that Panchayati Raj was introduced in the states of Rajasthan as well as Andhra Pradesh. ठीक है, गुजरात, हरियाणा, बिहार इज रॉन्ग, आंध्र प्रदेश। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू आर सीइंग द ट्रेंड नाउ, ठीक है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे पहले। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय राजस्थान इन Nagaur in 1959, but was first started by Andhra Pradesh. During the 50s and 60s, other state governments adopted this system as laws were passed to establish panchayat in various states. Maharashtra was the ninth state, basically. ठीक है, तो आंसर यहाँ जो है ए है, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Panchayati Raj system was adopted to, right? So what could be the most suitable answer? ठीक है, to make people aware of politics, to decentralize the power of democracy, to educate the peasants, to introduce a form of local self-government at the village, block, and district level. Now, somewhere educate the peasants तो नहीं है, but if I want to say this is make people aware of politics is also very subjective. Decentralizing the power of democracy. Now, state level पे भी तो decentralize हो सकता है, right? ठीक है, but to introduce a form of local self-government, at the village, block, and district level is the most suitable option. The answer here is D. Right? In Panchayati Raj, the system has 3 levels: Gram Panchayat at the village level, Block Samiti at the middle level, and Jila Parishad at the district level. Okay? Let's move to next question. Question number 8. Panchayati Raj system was introduced in the year. Now this is very factual question है ना, Nagaur में हुआ था राजस्थान में 1959. ठीक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लेकिन क्लियरली मेंशन है, यू शुड रीड एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959, ऑपरेट्स एट। 1979 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ ऐसा पूछा है ऑपरेट्स एट, उसके बाद डायरेक्टली वही पूछ रहा है कौन से ईयर पे, 1981 में। तो यू सी इन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज नाउ, राइट। द पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959, ऑपरेट्स एट, ठीक है। 3 लेवल आपको पता है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। आंसर हियर इज डी, ठीक है। 3 tier स्ट्रक्चर हमने देखा पंचायती राज का, राइट। द एम क्या है? टू डेवलप लोकल गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट जोन्स एंड विलेजेस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स एंड विलेजेस बेसिकली।
Last question करते हैं. Panchayati Raj administration is primarily aimed at. If you see the options, ठीक है, to increase agricultural production, no. To ensure rural development might be, ठीक है. To work for the upliftment of regions, not solely, ठीक है. To arouse in people of each area intensive and continuous interest in the community development program. See, the main aim of Panchayati Raj administration was to decentralize and to ensure political participation of people. Political participation of people. So out of four options, this D option is of more logical because it is for the political participation. है ना? To increase the agricultural production नहीं होगा. To ensure rural development भी not seems to convincing. But D, to ensure political participation. For that, we need people of each area to have intensive and continuous interest in community development. This seems more suitable. The answer here is D. Now, there's some pro mentor tip for you. From 2011 to 1979, there was much of a factual question, right? But from 2011 to 2024, ठीक है, these are questions were much of conceptual, right? UPSC concepts की तरफ है. Do read the concepts regarding 11th schedule, 12th schedule, part 9, part 9A. Okay? For further videos on different topics, remain tuned with us. Thank you.